Hello everyone. Today I am going to discuss about the venture capital. Venture capital is a very important part of financial services. Venture capital means when we are going to start any of the project, any of the activity, then we need the capital and the organizations that provides the capital in the form of the venture capital. Venture capital also known as the seed capital. Let's start with the topic. Venture capital means a project or activity that involves the risk and the capital the money or fund needed by the business. यानी कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट और एक्टिविटी जो हम नया स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें वहाँ पे फंड चाहिए तो उस कैपिटल को हम वेंचर कैपिटल कहते हैं. दैट इज ऑल्सो नोन एज द सीड कैपिटल. द कैपिटल इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट इन विच देर इज अ एलिमेंट ऑफ रिस्क, टिपिकली अ न्यू or a expanded business. Like we are going to invest in a new business or expanding business. That is known as the venture capital. Venture capital, as I already said, that is also known as the seed capital. Now, venture capital is a long-term risk capital to finance high technology project. Venture capital क्या हुआ? That is a capital that is invested for the long term and that is also invested in the risky, that is also in the risky project, and that's why that is known as the risky capital to finance the high technology project which involve risk but at the same time has stronger potential for growth. Now discuss about the venture capital features. When we discuss about the venture capital feature, क्योंकि हमने एक नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है वेंचर कैपिटलिस्ट ने, तो दैट रेज द हायर रिस्क. सेकेंड वन इज लॉन्ग टर्म हॉरिजन के लिए वी आर इन्वेस्टिंग द मनी फॉर अ लॉन्ग टर्म बिकॉज दैट इज अ स्टार्टअप और एक्सपेंडेड बिजनेस दैट टेक्स टाइम टू गिव द प्रॉफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन. Participation in management, the person who invests in your organization, he or she having a right or participation in your management in the form of equity participation and capital gain, and lack of liquidity because in the starting of the era you are not getting a regular return from these type of capital invested, and that's why there is a lack of liquidity. Now we discuss about the process of venture capital financing, how we go for that, what are the steps are there. In this I am taking 6 steps. First one is deal origination, screening, evaluation, deal structuring, post investment activity, and exit plan. Let's discuss one by one. Deal origination. First of all, we have to go for the venture capital deal. How we go for that deal? How we go the reference and how we search about the investors in the market. There are 3 ways when we originate the deal. First one is referral system. Second one is active search, and second is intermediaries. Referral system is an important source of deal. Deal may be refers to venture capital fund by their parent organization, trade partners, industry association, and friends. An important source of deal flow in the active research through network, trade fair, conferences, etc. And third source we discussed, that is intermediaries. And this type of source is used in the developed countries like the USA. There are certain agents or intermediaries are there who match the venture capital fund and potential entrepreneurs. Like these are the 3 ways how we go for, how we search for the capitalist, like a venture capitalist in the market. First one is we are on the basis of referral system, that is based on the reference by organization, trade partners, friends, etc. Active search on the basis of network, trade fair, conferences, etc. Intermediaries with the help of the agents. This is the first step. Second one is screening. Venture capitalists to choose the best venture first of all undertake research of all the projects on the basis of certain broad criteria. अब वेंचर कैपिटलिस्ट कौन हुआ? जिसको इन्वेस्ट करना है वो क्या करेगा? बेस्ट वेंचर वहाँ पे चूज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, मार्केट स्कोप, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, एंड स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग. These all things must be researched by a venture capitalist before investing in that project. नेक्स्ट वन इज़ हम वहाँ पे अप्रेजल करेंगे, अ डिटेल स्टडी ऑफ प्रोजेक्ट प्रोफाइल लाइक द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर, जिसको भी हम फंडिंग वहाँ पे कर रहे हैं, मार्केट पोटेंशियल हमारा कितना है, टेक्नोलॉजी फिजिबिलिटी कितना है, फ्यूचर टर्नओवर हमारा वहाँ कितना रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कितनी रहेगी. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस बिफोर गोइंग टू इन्वेस्ट एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Besides, venture capitalists in India undertake through risk analysis of the proposal. To certain प्रोडक्ट रिस्क इज द मार्केट रिस्क कितना रहेगा, टेक्नोलॉजी या एंटरप्रेन्योर रिस्क हमें वहाँ पे कितना रहेगा. लाइक वी हैव टू स्टडी अबाउट द रिस्क एनालिसिस
After considering in detail various aspects of the proposal, venture capitalists take a final decision in terms of risk return, like on the basis of the return, how much return we are getting on the basis of these, like what is the turnover, what is the profitability, what is the risk. After that, we have to take the final decision. Now the deal negotiation term. Once the venture is found viable, the venture capitalists negotiate the term of deal with the entrepreneur. Thus, it does so as to protect its interest. Term of the deal include amount, form, and price of the investment. Now, first of all, we have to search about the things, whether much return, how much risk is there in this particular project. After that, the venture capitalists negotiate on the deal with an entrepreneur, the person who taking the loan from the venture capitalist. In this, we have to discuss about the including what is the total amount, ठीक है, in which form. नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, इंटरेस्ट क्या रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें हम वहाँ पे नेगोशिएट करेंगे, डील करेंगे. टर्म ऑफ द डील शुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियली टू बोथ वेंचर कैपिटलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर. जो भी टर्म्स ऑफ द डील होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज म्यूचुअली बेनिफिशियली टू बोथ द वेंचर कैपिटलिस्ट जो फंड पैसा लगा रहा है ऑर्गेनाइजेशन, और सेकेंड एंटरप्रेन्योर जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लग रहा है. इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रक्चर शुड बी सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज. Now, post-investment activity. Before the investment, what are the things? Once the deal is financed and venture begin working, after giving finance, post activity, like after giving the finance, the venture like going to start working, the venture capital associate himself with the enterprise, a partner, a collaborator, in order to ensure that the enterprise is operating as per the plan. लाइक वेंचर कैपिटलिस्ट कहीं ना कहीं अपने आप को एसोशिएट करेगा चीज़ों के साथ, जो भी लाइक हम वेंचर कैपिटलिस्ट एसोशिएट हिमसेल्फ विद द एंटरप्राइज एज अ पार्टनर, एज अ कोलैबोरेटर, वहाँ पे एज अ गाइड, वहाँ पे वो एड ऑन करेगा अपने आप को. वेंचर कैपिटलिस्ट पार्टिसिपेट इन द एंटरप्राइज इन जनरली थ्रू अ प्रेजेंटेशन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इनफॉर्मल इन्फ्लुएंस इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अदर मैनेजरियल फंक्शन. लाइक इन दिस द वेंचर कैपिटलिस्ट नॉट ओनली प्रोवाइड द फाइनेंस as well as also provide the expertise in the various area like the marketing, finance and other managerial functions. Exit plan. The venture capitalist should make exit plan, determine precise timing of the exit that would depend upon the factor. Like after investing in the project, after getting the proper report of the project, now the venture capitalists have to decide whether he want to continue or exit from the organization. If he want to exit from the organization, that is dependent on the various factors like the nature of the venture, extent and type of financial stake, state of actual and potential competition, market condition. As exit stage of venture capital financing, venture capitalists decide about disinvestment alternative which are related to type of investment, equity and debt instruments. जब हम बात करेंगे एग्जिट स्टेज की बात करेंगे कि वेंचर कैपिटलिस्ट को अपना जो भी मनी है उसको आपको बाहर निकालना है, तो वो दोबारा से डिसइन्वेस्ट भी कर सकता है, दोबारा से इन्वेस्ट कर सकता है और ही इज़ गेटिंग अ वेरी गुड प्रॉफिट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. तो वो डिसाइड करेगा इक्विटी और डेट उसको किसके अंदर इन्वेस्ट करना है. तो वेंचर कैपिटलिस्ट में एग्जिट थ्रू आईपीओ, एक्विजिशन बाय अनदर कंपनी, वो कैसे अब एग्जिट कर सकता है, या तो वो आईपीओ के थ्रू एग्जिट कर सकता है, या जो अदर कंपनीज है वहाँ पे एक्वायर कर ले उसको, परचेज ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट शेयर बाय द प्रमोटर्स और परचेज ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट शेयर बाय द आउटसाइडर. तो दीज आर द रूट कि हाउ द वेंचर कैपिटलिस्ट एग्जिट फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर डील और that particular investment. अब हम बात करते हैं व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वेंचर कैपिटल. वेंचर कैपिटल इज़ अ वेरी गुड कंसेप्ट, दैट इज़ अ न्यू कंसेप्ट एज वेल एज द ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स इन द मार्केट. नाउ वी डिसाइड अबाउट द कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट. वेन एवर वी डिस्कस अबाउट एनी ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज इन द मार्केट, सम ऑफ द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी इज देयर. When we discuss about the advantage of venture capital, first one is they bring wealth and expertise to the company, like the venture capitalists provide the fund as well as the expertise to the company. Next one is large sum of equity finance can be provided. Third one is the business doesn't stand obligation to pay the money. Business ये नहीं कहे, business के पास business doesn't stand for the obligation like to repay the money in the market. That is in the form of the share also, that is in the form of the partnership also, because this capital is invested for the long term.
In addition to capital, it provides other information resources, technical assistance to make a business successful. This is a main difference in the private equity and venture capital. In venture capital, money is there in both the concepts, but in this capital plus as well as the other assistance that is provided by the organization. Now we discuss about the disadvantages, cons of the venture capital. First one, as an investor became part owner, the autonomy and control of the founder is lost, because in this the partnership is there, collaboration is there between the capitalist and entrepreneur. Second is a lengthy and complex process. It is uncertain form of finance. This is not a certain form of financing. Benefit from such financing may be realized in long run only. This is only for a long run concept, because we are not getting a profit in a short period of time. Now we discuss about the method of venture financing. I am taking here the 4 methods. So many methods are there, but these are the very beneficially methods. What are the method of venture financing, like how they contribute and in the organization, in which form, and how they get the profit from the organization. First one is equity participation. In equity participation, the venture capitalist participate in the equity share of the entrepreneur. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट मेथड. इन दिस यानी कि इक्विटी जो उसका पूरा 100% है, उसमें से कुछ होल्ड यानी कि 49 समथिंग प्लस वहाँ पे होल्ड जो कैपिटलिस्ट है उसका होगा, यानी कि इक्विटी के अंदर उसने अपना पार्टिसिपेशन कर दिया. सेकेंड है कन्वर्टेबल लोन. कन्वर्टेबल लोन क्या होता है, जैसे इक्विटी के अंदर आपका पार्टिसिपेशन है, आफ्टर सम टाइम दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू डेट फॉर्म, सो दैट दे आर गेटिंग अ रेगुलर फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. कंडीशनल लोन की जहाँ तक हम बात करते हैं, कंडीशनल लोन में हम इंटरेस्ट की बात नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पे हम रॉयल्टी की बात करते हैं. आफ्टर सम टाइम द कैपिटलिस्ट गेट अ रॉयल्टी फ्रॉम द प्रोजेक्ट. That is like on the basis of the condition, that is not based on the interest, on the timely payment that is given by the organization on the basis of the investment. In this, the royalty is given to the capitalist. Income note is a combination of interest plus royalty. यहाँ पे कुछ हमें वहाँ पे interest मिलेगा और कुछ हमें वहाँ पे royalty मिलना शुरू हो जाएगा. These are the 4 form कि how the venture capitalist invested in a particular company. नाउ अब हम बात करते हैं कि वेंचर कैपिटल कैन हेल्प द रिहेबिलेशन ऑफ द सिक यूनिट. जितने भी हमारे सिक यूनिट हैं उनको रिहेबिलेट करने के लिए वेंचर कैपिटल कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है. अपग्रेड करता है टेक्नोलॉजी को स्मॉल यूनिट की. इस प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग कंट्री इन द सर्विस सेक्टर लाइक टूरिज्म, पब्लिशिंग, हेल्थ केयर एक्सेट्रा. दे कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पीपल कमिंग आउट ऑफ यूनिवर्सिटी, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योर्स स्पिरिट. यानी कि जो बच्चे या जो भी स्टूडेंट हैं वो यूनिवर्सिटी पास आउट हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं, इफ़ दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप, तो वेंचर कैपिटल इज़ वेरी बेनिफिशियली इन दैट स्टेज. Now we discuss about one example here, example of venture capital funding. Paperfry.com, India largest furniture e-marketplace, has raised $100 million in a fresh round of funding led by Goldman Sachs. Paperfry will use the fund to expand his footprints in cities by adding to his growing fleet of delivery vehicle. It will also open new distribution center, expand his carpenter assembly service network. This is an example of the venture capital. Conclusion: on the basis of all the points, like when we discuss about the venture capital investment, in this the high return expected, one should do a complete study of the project, considering each and everything after investing in the project. Thank you so much. Hope you like the video.